And suppose this R is strictly positive and maybe extended real number. So maybe extended real number, yeah. So less than equal to infinity. So that this is your number A. अगर आप चाहे तो particular zero ले सकते हैं. And this is your radius of convergence R. So this is A minus R and this is A plus R. And suppose inside this radius of convergence, this infinite series, this converges. So, and suppose this is equal to some function fx. Some function fx. तो लास्ट थ्योरम से हमने ये बताया था कि इसका जो डेरिवेटिव टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव होगा, दैट विल आल्सो बी uniformly convergent series, and it uniformly converges to the derivative of the function f, so that this f dash x, this becomes if you differentiate term by term, so n an and x minus a to the power n, right? So the term by term differentiating series, this will convert, this will also uniformly converges, and it uniformly converges to a function. But as I told on last turn, that because this series converges to some function, this series converges to say some function g, then this g must be f dash. So therefore this f dash x is equal to g. And you can apply the same theorem repeatedly. So you will get this f double dash x as this n minus 1 and say an x minus a to the, oh sorry, n minus 1 here, and here n minus 2, and maybe next time also. So if you differentiate say k times, so what you will receive? So you will get this n minus 1 and dot dot n minus k plus 1, and then this a n and x minus a to the power n minus k, right? Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर इन सभी infinite series में, because this all these infinite series converges to the function given on left hand side, inside its radius of convergence, maybe if you take some number r which is just less than r, so within this a minus small r, a plus r, it uniformly converges to the function on left hand side. Okay, so it must converge to the point a also. So if you just put x is equal to a in all these series, what will you get? So if you put x is equal to a here, ये क्या मिलेगा? X is equal to a, तो ये 0 हो जाएगा. So all the terms on right hand side will be 0. First you put here. So if you put x is equal to a here, what you will get? So this a0 is equal to fa. So if you put x is equal to a in all the above equations, so you will have this a0 is equal to fa. अगर इसी तरह से इस दूसरे इक्वेशन में अगर आप x is equal to a पुट करें, तो इसमें भी सभी टर्म 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट वन टर्म, और वो वन टर्म क्या होगा? पहला टर्म, फर्स्ट टर्म विल बी, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा? आपकी फर्स्ट सीरीज है a0 प्लस a1 x माइनस a स्क्वायर प्लस डॉट एंड सो ऑन. इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो सॉरी a1 x माइनस a टू द पावर 1 एंड प्लस a2 x माइनस a स्क्वायर. सो द फर्स्ट टर्म, this a0 will be 0 when you differentiate, and when you differentiate the second term you will get a1 plus 2 times a2 x minus a plus 3 times a3 and x minus a square and plus dot dot and so on. So if you put x is equal to a here, so all the terms except this first term will be 0. So therefore this a1 will be f dash a. So this a1 will be f dash a. Similarly, if you put in the second equation, you will get this a2, and a2 is equal to
अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो you'll get 2 into 1. If you want you can write here factorial 1 also. But if you put here x is equal to a, after differentiating it, you will get 2 into 1 a2 is equal to f double dash a. So therefore this a2 is nothing but f double dash a upon factorial 2. Here you can also write factorial 1. And in a similar way, if you calculate, you will get this ak is equal to kth derivative at the point a upon factorial k, right? And these are nothing but the Taylor's coefficient in the Taylor expansion of the function fx. Is it okay to everybody? Yes sir. अब आप किसी फंक्शन Yes. जब आप किसी फंक्शन fx को अगर जो कि इन्फिनिट मेनी टाइम डिफरेंशिएबल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप निकालते हैं वन वेरिएबल के केस में, तो क्या होता है, दिस fx इज इक्वल टू दिस सिग्मा at the point a in the neighborhood of a, so x minus a to the power n and f nth derivative at the point a upon factorial n. तो इस तरीके से आपने देखा कि ये एक पावर सीरीज हमको दिया गया था, और ये पावर सीरीज जिसके कोफिशिएंट्स रियल या इनफैक्ट आप चाहे तो कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं. सो हम रियल केस में केवल अभी स्टडी कर रहे हैं मान लीजिए. तो इन केस ऑफ रियल, so if this converges to some function fx within its radius of convergence r, and if this r is strictly positive, then it's Taylor series expansion. So because this uniformly converges within this radius of convergence, you can differentiate term by term the series any number of times, and then this the nth term of this power series is nothing but the the nth term of the Taylor series, that is nth derivative of the function at the point a divided by factorial n. Is it okay? और जो पिछला थ्योरम हमने लिखा था एग्जैक्टली वही कह रहा है कि उसमें जो nth टर्म है, दिस an is nothing but nth derivative of the function at the point a divided by factorial n. Right? Yes sir. Yeah. Yes, sir. तो एक तरीका था जब हम टेलर सीरीज की बात करते थे कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का टेलर सीरीज, अगर ये फंक्शन इन्फिनिट मेनी टाइम डिफरेंशिएबल है तो हम इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ एक इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ था एंड दिस इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेस टू ए फंक्शन f, और अब ये फंक्शन चूंकि इन्फिनिट मेनी टाइम डिफरेंशिएबल है तो इसका हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, और उस टेलर सीरीज एक्सपेंशन का जो nth टर्म है वो एग्जैक्टली इस an के इक्वल है. जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है, जो nth टर्म कोफिशिएंट है, दैट इज नथिंग बट दिस an. तो an नथिंग बट योर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन k टाइम्स n टाइम्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n. Yeah. Okay. And just a minute. आवाज नहीं आ रही. Voice on अपना voice. Oh, sorry. Yeah. Oh, yes. Now it's okay. अभी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो मैं ये कह रहा था कि इसमें हम लोगों ने कन्वर्स देखा एक तरह से. अभी तक हम लोग कोई इन्फिनिट टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात करते थे और उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालते थे. अब एक आपको पावर सीरीज दिया हुआ है और पावर सीरीज
पावर सीरीज जो कि कन्वर्जेंट पावर सीरीज है विद इन इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और फिर उस फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है आपका दिया गया पावर सीरीज है। ये मेरे कहने का मतलब। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने ये देखा कि हर पावर सीरीज के लिए एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, एक रियल नंबर हमको मिल रहा है, इनफैक्ट एक्सटेंडेड रियल नंबर हमको मिल रहा है, बट हाउ टू कंप्यूट इट, how you compute it, there exists some r। ये थ्योरम जो है वो केवल एग्जिस्टेंस की बात करता है कि हर पावर सीरीज के लिए एक एक्सटेंडेड रियल नंबर होगा, बट व्हाट इज द रियल नंबर, हु विल कैलकुलेट द रियल नंबर। तो नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट करने का कुछ तरीका सीखेंगे। तो let us write one way to compute the radius of convergence. So maybe in form of a result you can write. So proposition. So suppose this an x minus a to the power n is a power series. This is a power series, and suppose one of the following limit exists. So the first limit is, इनमें से जो भी लिमिट एग्जिस्ट करे, सपोज दिस लिमिट, दिस an plus 1 upon an, suppose this limit exists and is equal to rho as n tending to infinity. Or the second, this limit an to the power 1 upon n, this is equal to rho. So if either of these two limit exists, suppose 1 or 2, suppose this is equal to, suppose limit, I think we should not write like this. Suppose at least one of, यहाँ पे लिख सकते हैं, at least one of the following limit exists. One of the following limit exists, and the limits this is equal to rho or this is equal to rho. इनमें से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट करे and is equal to rho. Then your radius of convergence, this r, is equal to 1 upon rho. Then the radius of convergence is 1 upon rho. Right? तो अब आपके पास एक तरीका मिल गया कंप्यूटेशन के लिए, इनमें से कोई भी एक लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो आप एक तरह से कह सकते हैं सफिशिएंट कंडीशन हमको मिल गया। तो इफ एनी वन ऑफ दीज टू लिमिट एग्जिस्ट, देन 1 upon rho is actually the radius of convergence. So the proof is not very difficult. So proof. So this is your power series an x minus a to the power n. So what you do, so first let us fix the point x. So here is your a. Let us fix some point x, and we discuss the convergence of the series at the point x. So we'll apply the ratio test. You remember the ratio test of convergence of a series, just convergence. I'm not talking about uniform convergence. So for convergence, if this n plus 1th term upon nth term, right? If n plus 1th term, if you want, you can take the modulus. If n plus 1th term upon nth term, if this is less than 1, right? So maybe you take the limit. If limit n tending to infinity, what is the ratio test? Ratio test for the convergence of an infinite series. So if n plus 1th term is to nth term, limit n tending to infinity, if this is less than 1, then your series is convergent. Convergent. And if this is greater than 1, divergent. But the test fails when equal to 1. So I'm not talking about equal to 1 case. So we'll just use these two facts, that n plus 1th term over nth term, limit n tending to infinity, if
this is less than 1, in fact this limit exists, and say this is equal to a and that a is less than 1, so then the series is convergent. Otherwise, and greater than 1, then it is divergent. So let us discuss here, what is your Tn plus 1 over Tn, and take the mod. So this is your modulus of An plus 1 over An and x minus a. And you may take the limit here also. So limit n tending to infinity. Here also you take limit n tending to infinity. So now you know this An plus 1 over An as n tending. So there is no n here. आप इसको बाहर ले सकते हैं. There is no n here, but An plus 1 upon An, limit n tending to infinity, this is equal to rho. Suppose we consider the first case. So this is equal to rho into mod x minus a, right? And x is a fixed number. You have taken this x as a fixed number. So it means if this quantity is less than 1, then your series is convergent, right? It says that if this quantity is less than 1, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. If this quantity, because now this x is a fixed number, so x is a fixed real number, a is a fixed real number, so you just take the difference and multiply by this number rho. So if their product is less than 1, then your series is convergent. So it means this x minus a, when this x minus a, this is less than 1 upon rho, your series is convergent, right? Is it okay? Yes, sir. This rho into mod x minus a is less than 1. It means this mod x minus a is less than 1 upon rho. Whenever it is less than 1, your series is convergent. So when the difference between, in fact, distance between x and a is less than 1 upon rho. So if this distance from x to a is less than 1 upon rho, certainly it is convergent. So at least your radius of convergence is 1 upon rho. It may be bigger than this, but at least here it's confirmed. Only this statement confirmed that whenever the distance between x and a is less than 1 upon rho, your series is convergent. So therefore, this implies that your R must be less than equal to 1 upon rho. This R means the radius of convergence. But again, from the same equation, you know that if this limit greater than 1, the series is divergent. So it means when this x minus a, the distance between x minus a greater than 1 upon rho, the series is divergent. So it means this R must be equal to 1 upon rho, right? So therefore, this radius of convergence is exactly equal to 1 upon rho. Is it clear to everybody? Yes, sir. केवल हमने इस रेशियो टेस्ट को इस्तेमाल किया और हमने देखा कि अगर ये लिमिट जो है, if this limit exists, then this R, your radius of convergence is nothing but 1 upon rho. आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, this R is equal to an upon an plus 1 mod limit n tending to infinity. But this is just a way to write. Yeah, it's okay. And in a similar way, you can also prove this, that if 1 upon nth power of an, if use the same argument. So there you have to use the nth root test. You know, there is nth root test for the convergence of the series. You already have studied. So you can use that argument to show that if this limit exists, then this R is also equal to 1 upon rho. सर, Yeah? Sir. यहाँ पे जो हम लिमिट ऑफ an प्लस 1 अपॉन an लेते हैं, इसके लिमिट सुपीरियर की बात करते हैं यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में। लिमिट सुपीरियर ऑफ an प्लस 1 बाई an इक्वल टू rho। हाँ, तो यहाँ पे आपने तो सर अगर लिमिट ऑफ an प्लस 1 बाई an कर दिया, तो ये तो दो डिफरेंट थिंग्स हो जाएंगे। यहाँ पे लिमिट सुपीरियर की बात की जाती है, लिमिट सुपीरियर ऑफ an प्लस 1 बाई an इन बोथ सीरीज। सर लिमिट सुपीरियर ऑफ
an की पावर 1/n इक्वल टू रो होता है वो। काउसी होता है ना भाई, वो काउसी हेडमार्ड होता है वो। तो क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, आप बताइए। व्हाट सर इज वहां पे डिफरेंस बिटवीन सीरीज दीज? के लिमिट सुपीरियर मतलब सीरीज का जो सुप्रीमम होता है उसके टर्म का हम लेते हैं वहां से, और यहाँ पे सीरीज का हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो दोनों में डिफरेंट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स भी हैं सर इस पे, जहाँ पे अगर हम डायरेक्ट ले लेते हैं तो लिमिट, ये लिमिट ऑफ an+1 ये चेंज हो जाएगा लिमिट सुपीरियर ऑफ an+1/an के करिस्पॉन्डिंग। हेलो सर, वो तो रूट टेस्ट में लेते हैं ना, रेशियो टेस्ट में नहीं ना? नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। या काउसी हेडमार्ड टेस्ट में सर हम सुपीरियर लेते हैं, जबकि काउसी रूट टेस्ट में सुपीरियर नहीं लेते हैं। no, for the moment I think this is a sufficient condition, so don't worry about that. So this is just a sufficient condition that if this limit exists, right, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, आप लिमिट आप किसकी बात कर रहे हो कि ये जो रेशियो टेस्ट में यहाँ पे आप ले रहे हो, ये लिमिट सुपीरियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं सर, अगर आप लिमिट ऑफ an+1/an इक्वल टू रो कर दिया आपने, तो रो जो है वहां पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी को दिखा रहा है, 1/रो। 1/रो। तो हाँ, फिर जब हम इस सीरीज का अगर an x माइनस ए होल की पावर n का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी है इस टेस्ट के थ्रू 1/रो हो गया। बट सम क्वेश्चन सर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे अगर हम लिमिट सुपीरियर की बात ना करें तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी वहां चेंज हो जाती है। so what is your example? Maybe I may be wrong, so can you give the example, let us verify, क्योंकि हमें नहीं ऐसा लग रहा है, हमें लग रहा है कि दिस इज जस्ट ए सफिशिएंट कंडीशन दैट व्हेनेवर दिस लिमिट एग्जिस्ट, व्हेनेवर दिस मॉडुलस ऑफ an+1 अपॉन, शायद आप ऐसा तो नहीं मॉडुलस हटा के तो बात नहीं कर रहे हैं? आई एम टेकिंग अबाउट दिस मॉडुलस an+1 अपॉन an। नहीं सर, वो मॉड्यूलस के बाहर ही वहां लिखा हुआ है लिमिट सुपीरियर ऑफ an+1/an इक्वल टू रो। किस किस बुक का रेफरेंस आप दे रहे हैं? आप किस किस बुक में ऐसा लिखा हुआ है? आई जस्ट वांटेड टू सी बिकॉज़ कुम्ब्रेशन प्रेफर दिस स्टेटमेंट ओनली दैट एंड दिस इज ए सफिशिएंट कंडीशन। सर अभी इसको रहने दीजिए, मैं आपको वो बुक का वहां से हाँ, भेज देता हूँ पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भेजिए, देखेंगे हम लोग बिल्कुल हर स्टेप पे, अगर कहीं कोई करेक्शन की गुंजाइश है तो बिल्कुल हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर किसी दूसरी किताब में इससे बेटर, बिकॉज दिस इज जस्ट, हाँ ये हो सकता है इसके अलावा भी अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, उसको भी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कह देंगे, लेकिन दिस इज जस्ट, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट दिस इज ए सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन कि हाँ, या कहीं हमने ये नहीं कहा कि इफ एंड ओनली इफ व्हेनेवर दिस लिमिट एग्जिस्ट देन r इज इक्वल टू 1/रो। ये केवल एक, हाँ सर इन केस ऑफ कन्वर्जेंस लिमिट सुपीरियर इंफीरियर सब सेम होते हैं ना, लिमिट के इक्वल ही होते हैं। अगर सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो लिमिट सुपीरियर इंफीरियर एंड लिमिट तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। अब ये चीजें मुझे क्लियर नहीं हो रही हैं, आप लोग क्या कह रहे हो, क्योंकि हमें मे बी आई विल सी इट एंड you please send the reference, I will again see, but as far as I know that this is correct and this is just a sufficient condition। हम उसको देखते हैं कि हाँ ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें ऐसा कंट्रडिक्शन मिल रहा है, क्योंकि हम फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ केवल उस पर आप लोग ध्यान दें कि फिलहाल ये एक सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फिर r1/रो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। And you please send the reference, I will see again that if there is any difference you can improve this result, we'll improve it, right? ओके सर। हाँ, but as far as I know कुम्ब्रेशन ने तो इस तरह का वो नहीं किया होगा कि अगर कोई इसमें कोई एरर है तो फिर I think anyway I will see and कहीं कोई अगर गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट। ये सर आप जो दे रहे हैं ये सफिशिएंट कंडीशन ही है। हाँ, I'm talking about sufficient condition, I'm not talking anywhere। हाँ हाँ, अगर ऐसा हुआ तो यही होगा, ये तो डन है। हाँ, I'm just only talking about और ये जो लड़का कह रहा है ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी क्लास में। हाँ, तो मे बी एक दिन किसी दिन आप बीच में क्लास, जो कि आज तो थर्सडे आप ही का क्लास था, लेकिन चूंकि कल क्लास मेरा नहीं चला इसलिए आज हमने ले लिया क्लास, तो आप चाहो तो बीच में किसी एक दिन एक्स्ट्रा क्लास, जैसे शायद कोई स्टेटिस्टिक्स की क्लास नहीं चल रही है, स्पीच जो है, तो अभी वो जीपी सिंह साहब की तबीयत नहीं सही है,
तो आप बीच में अशोक ना हो तो एक दिन क्लास लेके और इसमें कुछ एक्सरसाइजेज मैं दे दे रहा हूँ इसको भी, आप जिसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कम से कम लोग कैलकुलेट कर लें, तो एक दिन आप ले लीजिए फ्राइडे सैटरडे में, ठीक है? ठीक ठीक, देख लेंगे। हाँ हाँ, फ्राइडे सैटरडे में शायद स्टेटिस्टिक्स की क्लास इन लोगों से पूछ लीजिएगा कि कौन सी क्लास अभी नहीं चलने वाली है। शायद हमें लगता है अभी जीपी सिंह साहब का थर्सडे सैटरडे दोनों दिन क्लास रहता है। उनका क्लास कब से रहता है? 12 से 1 रहता है ना? स्टेटिस्टिक्स का क्लास कब से रहता है आप लोगों का? 2 बजे सर। कल 2 से 3 है, तो आप 2 से 3 वाला क्लास ना हो तो ले लीजिए इन लोगों का। और ये कुछ एग्जांपल्स मैं लिख दे रहा हूँ, इसको वेरीफाई करा दीजिए, इसको क्लैरिफाई करिए। और हम भी उसको जरा देखते हैं कि कल रख लीजिए, कल रख सकते हैं। कल के परसों ये लोग बताएं, हम क्या, हम तो कल परसों दोनों दिन होता है। यस सर। नहीं, एटलीस्ट 2 1 दिन डे होता है सफिशिएंट। सर, कल और परसों क्लास होती है। तो मैसेज मुझे कर दीजिएगा कि आप लोग सहमत जिस पे हो, तो फिर हमें बताइएगा। सर कल ले लीजिए। ओके सर। टाइम बता देना, ठीक? ओके 2 से 3। ठीक। ओके। So maybe I am giving few examples, will verify examples. So these are very simple examples. You just calculate the radius of convergence. Maybe this x n to the power n, x to the power n. For this x to the power n upon factorial n. And simply for x to the power n, इसके लिए आप लोग जानते भी हैं वैसे, 4th minus to the power n, x to the power n upon n. या तो ये और भी सीरीज के लिए आप लोग अशोक आपसे चर्चा कर लेंगे। एक दो और सीरीज आप थोड़ा बढ़िया सीरीज, ये तो बहुत ही सिंपल, दीज आर ऑल ट्रिवियल सीरीज। एक तो थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन इनको बता दीजिएगा, ठीक है? ओके। So now let us come to yeah. So you have already studied maybe in BSc classes this Taylor's theorem of one variable, of functions of one variable, real variable. So you have studied this Taylor's theorem, which is in some sense is a generalization of mean value theorem. So Taylor's theorem. So what is its statements? So for mean value theorem, you know that if your function is continuous on this closed interval AB and differentiable in this open interval AB, and then there exists a point C in open interval AB such that this f dash C is equal to FB minus FA upon B minus A. In Taylor's theorem, what we do that if your function is n times differentiable, suppose f is n times differentiable, and its nth derivative is continuous on closed interval AB, and maybe one more time differentiable on open interval AB,
right? Then there exists a point C in AB such that you can write this function fx in the form of the series, this kth derivative at the point A over factorial k and x minus a to the power k. K varies from 0 to n, and plus this n plus 1th derivative at the point C upon factorial n plus 1 and x minus a to the power n plus 1. तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इस तरह का रिजल्ट जो है टेलर्स थ्योरम, जिसको कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो n टाइम्स डिफरेंशिएबल हो और इसका n प्लस 1th डेरिवेटिव इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, आप इसको एग्जैक्टली n इज इक्वल टू 0 के लिए आपका मीन वैल्यू थ्योरम आपको मिलेगा, और n प्लस 1th डेरिवेटिव ओपन इंटरवल ए बी में अगर एग्जिस्ट करता है, तो at least one point you will get in the interval, in this open interval AB, such that you can write fx in the form of this series. In particular, if your f is C infinity, then you will get a power series of this form, and this fx is equal to, you will get a power series of this form. I should not write here equal to, maybe I'll explain it. So then you get a power series, what is called Taylor series, f k a upon factorial k and x minus a to the power k, and k is equal to 0 to infinity. So if f is C infinity, you will get this power series, right? You will get this power series. Now the question is it always possible that this power series converges to this function fx? Can you write this always within its radius of convergence? So when this power series converges to this function within its radius of convergence, we say that this function f is analytic. So this you remember that there are examples where f is C infinity, you can write this Taylor series expansion, but this Taylor series expansion not converges to the function in the neighborhood of the point A. If it converges to the function fx in neighborhood, in that neighborhood we say that the function is analytic. Is it okay to everybody? So please repeat once again. Yeah. So you take a function f. So let us start. Let us speak from this starting point. So I'm talking about this Taylor's theorem. You have already studied for one variable calculus, which was the generalization of mean value theorem. And the statement was, if f is n time differentiable and its nth derivative is continuous on a closed interval and differentiable in open interval, there exists a point C. There exists a point C inside AB where you can write this fx in this form. In particular, if f is C infinity, ठीक है, अभी तो यहाँ पे केवल n टाइम डिफरेंशिएबल और उसके कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो, बट इफ सपोज f इज C infinity, तो उस केस में ये जैसे जैसे आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी का क्लास बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज बढ़ती जाएगी. एंड इफ इट इज इंफिनिटी, यू गेट एन इनफिनिट पावर सीरीज, राइट? Now the question is,
whether this infinite power, यहाँ पे तो आपको कहा जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे exactly equal हो जाएगा. There is a point C, at least one there, maybe more than one point, but at least one point C is there, such that this fx is exactly equal to this a power series. You can say a polynomial function of degree n plus 1. But if f is C infinity, you will get an infinite power series. Now the question, this infinite power series, whether it converges to your function or not. So if it converges to the function fx in the neighborhood of the point A, in that neighborhood, we say that your function f is analytic. So we say that f is analytic. Analytic in the neighborhood of the point A. So let us consider some open interval, maybe I, let I be an open interval. Open interval will be subset of R, and f is a map from I to R, and f is C infinity. In fact, suppose f is C infinity. So now consider f is C infinity. So now consider the power series. Consider this power series, this fn a upon factorial n x minus a to the power n for some a in I. Right? So this is called the Taylor series expansion. This is called Taylor series expansion or Taylor series expansion. Yes, Taylor series in the neighborhood of the point A. In neighborhood of x is equal to A. In some neighborhood of the point x is equal to A. Right? N is equal to 0 to infinity. Now, if this infinite series, if this Taylor series, this converges to the function fx, now we say that f is real analytic in a neighborhood of the point x is equal to A if above Taylor series converges to the function fx in that neighborhood. Right? ये इनफाइनाइट सीरीज आपको मिल जाएगा, जब भी फंक्शन सी इंफिनिटी होगा आपको इनफाइनाइट सीरीज मिल जाएगा। लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज इस फंक्शन को कन्वर्ज करे जिस फंक्शन का ये टेलर सीरीज है। अगर ऐसा होता है तो इस फंक्शन को हम कहेंगे रियल एनालिटिक। सो मे बी you give an example, you construct example, or at least think over that, to give an example of a function which is C infinity, but this Taylor series expansion of the function is not convergent, and in fact it does not converge to the given function. So give an example. So maybe this is an exercise for you.
to think over that. So give an example. Give an example of a function, of a C infinity function, which is not analytic. Which is not analytic. Give an example of a C infinity function which is not analytic. तो ये कोई बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जो देखते ही आप उसको गेस करेंगे. यू हैव टू थिंक ओवर दैट. केवल आप सोचें, देखें इस तरह क्या कोई एग्जाम्पल आप, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल पॉलिनोमियल फंक्शंस आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा, x to the power n टाइप के फंक्शंस हैं, sin x, cosine x, ऑल दीज फंक्शंस आर एनालिटिक फंक्शंस. आपको ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना है कि जो जिसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप निकाल सकें, बट दैट टेलर सीरीज एक्सपेंशन should not converge to the given function. Okay, so I think this is the best time to stop today. So on next turn, maybe tomorrow or day after tomorrow, Ashok will discuss some examples, and on next turn I will discuss the next result, which is very important result of this, maybe last result of this, you can say real analysis, what we'll study, and that is called Weierstrass approximation theorem. तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग Weierstrass approximation theorem को स्टार्ट करेंगे. और इन द मीन टाइम कोई एक दिन आप लोग फिक्स करके अशोक से कुछ एग्जांपल्स को आप लोग, या इस पे कुछ और डिस्कशन आप लोग करना चाहें तो कर लीजिए. ओके, सो थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर वो गूगल पे ग्रुप